Hello, good evening, and welcome everyone to Synapse Career Institute. I hope my voice is audible. Is my voice audible to everyone? Just wait for 1 or 2 more minutes and then we'll start the class. Yes, good evening, Kriti. Thank you so much. Sudhanshu, good evening. Good evening, Chanu. What's going on? How is the classes and everything going on? How is the institutes and stuff? Various other things that you are studying going on. शुरू करते हैं थोड़ी देर में. So in today's lecture, how are you, sir? I am also fine. चल रही है जिंदगी. Yes. So in today's lecture, we are going to cover about the last topic of our active transport, that is ABC type transport proteins and some more major stuff that we are going to study. जो कि इनको पढ़ना है. And today we will be completing our module number 1, which is membrane structure and transport. Right? So we'll be completing this particular topic today, and in the next classes we are going to move on to the next module like endocytosis, exocytosis, uh, various cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi bodies and stuff. We will be working on that after this, right, from next classes. And today we'll be discussing about active transport, and we'll have some questions which we'll be discussing. Basic questions हैं, ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं हैं, easy वाले ही हैं. We'll be discussing about those. So let's get started, I guess. I hope everyone have filled this Google form which I have shared in the meeting in the WhatsApp group, right? So let's get started, right? So is everyone ready? Shall we start? Right? Shall we start the class? The books are here. Everyone knows about them. Yes. Okay, cool. Thank you. Let's get started. It's already 5:40. You won't be having the second class today because of some reasons which are beyond my control as well. So I can't help. We'll be moving on that, not a problem. Yes. So in the previous lectures, we discussed about in the previous lecture we discussed about the ATP transport, right? How the active transport works कि ATP का use करके कैसे हम transport proteins का इस्तेमाल करते हैं, कैसे transport solute को move कराते हैं. We discussed about sodium potassium pump, right? We discussed about sodium potassium pump, we discussed about calcium pump, we discussed about their inhibitors, right, and various other stuffs. We also discussed about the types of these ATP driving pumps, right? ATP driving pumps के हमने types के बारे में बात की थी. We discussed about P type ATPases, V type ATPases, F type ATPases, and in very less amount ABC type ATPases, राइट. पी टाइप एटीपीएसएस के अंदर हमने बात किया था कि फॉस्फोराइलेशन जो है इज अ मेन इवेंट जो कि ड्राइव करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को, राइट. वी टाइप एटीपीएसएस एंड एफ टाइप एटीपीएसएस दे आर काइंड ऑफ बोथ सिमिलर in which protons are being
इन्वॉल्व, प्रोटॉन्स जो हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस, the V type ATPases works in the vacuoles, right, majorly in the vacuoles, and F type ATPases works in the mitochondria का F0 F1 particle, right. We discussed about them. And the ABC type transport we discussed about, these are ATP binding cassette proteins, right. ABC stands for ATP binding cassette proteins, okay. So these are ABC transport proteins, right. They have highly conserved ATP binding domain and are transporting, so they help transport ions, ABC wale. They help transport sugar molecules, they help transport amino acids as well. So we discussed about these basic stuff. So in today's class, I'll be discussing about the structure and the function of ABC type transport proteins, right? तो ABC टाइप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन. सो ABC टाइप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैव टू ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन. अगर मैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, सो दे हैव टू ट्रांसमेम्ब्रेन segments, right, or we can say two transmembrane domain. They have two transmembrane domain, each having 6 alpha helix, each with 6 alpha helix. हर एक के अंदर एक दो डोमेन्स होती हैं, दोनों डोमेन्स की दोनों के अंदर ईच के अंदर 6 अल्फा हेलिक्स हैं. तो एक ये चीज है. सेकंड इज टू एटीपी बाइंडिंग डोमेन या एटीपीएस डोमेन. दो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और दो एटीपी बाइंडिंग डोमेन है. ठीक है, दो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और दो एटीपी बाइंडिंग डोमेन. एटीपी बाइंडिंग डोमेन या एटीपीएस डोमेन को हम न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन भी कहते हैं बिकॉज एडिनोसिन इज काइंड ऑफ बाइंडिंग, सो वी कॉल दैट एज न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन also. न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, राइट, NBDs, राइट. तो दो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जो कि स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसको एम्बेड करने में इजीली रखती हैं. एंड दो एटीपी बाइंडिंग डोमेन है जहां पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है इनटू एटीपी एंड द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, राइट. सो देयर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स, जो उनकी जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की जगह है, राइट, दैट मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सो देयर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करके इट कैन मूव इनसाइड, right, or it can move outside. The molecule can move outside. It can move from inside, from outside, sorry, from outside to inside or from inside to outside. So they, depending upon the phosphorylation where it is taking place, depending upon the ATP binding site, depending upon this ATPase domain कि ये ATPase domain किस तरफ में है, right, outside में या inside में है, the transport of that particular solute, the binding site of that substrate changes, right. वो inside हो सकता है या outside हो सकता है. द एटीपी हाइड्रोलिसिस अगर होगा, राइट, तो उससे क्या हो जाएगा, वो डिसोशिएट हो जाएगा, राइट. सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा एंड इजीली जो मॉलिक्यूल्स को सोल्यूट को पास ऑन कराना है वो हम इजीली करा सकते हैं. द फर्स्ट ऑफ दीज प्रोटीन्स, ये जो एबीसी टाइप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, ये सबसे पहले फर्स्टली दे वर डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया. दे वर फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड और डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया. They were first characterized in bacteria, and the first eukaryotic transport protein was discovered, right. तो सबसे पहले जो डिस्कवर हुए थे वो बैक्टीरिया में हुए थे. यूकैरियोट के अंदर भी डिस्कवर हुए थे. तो जो सबसे पहला यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन था, यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो था, दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय MDR. मतलब उसका एग्जांपल है, इट इज डिस्कवर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ जीन MDR, मल्टीपल या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन, multi drug resistance gene. That means
जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन है MDR, उसकी जो प्रोडक्ट है, राइट, उसका जो प्रोडक्ट है, राइट, उसका जो प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्ट। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन, जो जीन का प्रोडक्ट आएगा प्रोटीन, राइट, विच इज MDR प्रोटीन। तो MDR protein is nothing but it is an example of a eukaryotic ABC type transport protein, right? It is also called as P glycoprotein. This MDR protein is also named as P glycoprotein. It is also named as P glycoprotein, right? And it is because of this protein MDR which make cancer cells resistant to varieties of drugs which are used in chemotherapy, right? Different chemotherapies are generally used for this. तो ये एक यूकेरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन के थ्रू प्रोटीन है, राइट। तो इसके ऊपर टारगेट इजीली जो है हम नहीं कर पाते हैं, राइट, फॉर, तो इसीलिए जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं वो काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर रेजिस्टेंट रहती हैं, तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर अबाउट दिस अभी थोड़ी देर में, राइट। सो this is about the first, that is bacteria, and eukaryotic ABC transport which is MDR, ठीक है। तो अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं तो 2 मिनट, तो इकोलाई के अंदर अराउंड 5% ऑफ द टोटल जीनोम, दैट इज 78 जीन्स, बैक्टीरिया के अंदर अराउंड 5%, around 5%, or you can say 78 genes encode the ABC transporters. They encode ABC transporters. They encode ABC transporters, and they are involved in varieties of solutes which include, बैक्टीरिया के केस में बोल रहा हूं मैं, varieties of solutes के उसके अंदर involved हैं, and this include lipid molecules. This includes various lipid molecules, drugs, right, various drugs जिनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, right, we have inorganic ions, right, different polysaccharides, and peptides, so these are the stuffs which are being transported by an E. coli bacteria, right, which are involved in this ABC type of transport in E. coli, right. So अगर अब मैं यूकेरियोटिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करूं, which is MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन, सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन का ये जो प्रोटीन है MDR प्रोटीन, इट इज नोन टू ट्रांसपोर्ट द ड्रग्स out of the cytosol effectively. I'll write it here. Yes, right. So in MDR, जो MDR है आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जीन, MDR पंप्स बोलो या MDR, राइट, दे आर वर्किंग एज एन ATP बाइंडिंग, ATPase की तरह काम कर रहे हैं। तो MDR जो भी पंप्स हैं, दे पंप आउट द ड्रग्स, राइट, दे पंप आउट ड्रग्स आउट ऑफ द साइटोसोल, दे पंप आउट ड्रग आउट ऑफ द साइटोसोल, साइटोसोल से आपकी ड्रग मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड फेंकते हैं इफेक्टिवली, राइट, बिकॉज अगर किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को आपने लिया है, सपोज हम जैसे बोलते हैं कीमोथेरेपी के अंदर, राइट, हमने कीमोथेरेपी प्रोवाइड की है किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, तो व्हाट वी सी इज कि वो पर्टिकुलर ड्रग जो भी हमने कीमोथेरेपी के थ्रू कैंसर्स में दी है, it is being pumped out of the cytosol by these particular proteins. Hence we say that these cancer cells are kind of, मतलब this chemotherapy kind of becomes resistant to certain cancer cells, क्योंकि ये कैंसर सेल्स के अंदर MDR प्रोटीन जो है वो हाईली एलिवेटेड रहता है, राइट। सो MDR पंप का मेजर काम क्या है, इट पंप्स आउट द ड्रग्स आउट ऑफ द साइटोसोल effectively, and they're highly elevated,
highly elevated in cancer cells, right? Which owes for their resistance to varieties of drugs used in chemotherapy, right? So thus they are relatively very resistant. Therefore, cancer cells are very resistant to toxic effects of the drugs, right? But it is also sometimes very efficient working way, because normal cell के अंदर अगर आपको कोई किसी harmful chemical अगर आपकी body में आ गया है, तो what it is doing, it is helping that harmful chemical to remove out of that cytosol. तो normal condition में it is very good. बट अगर मैं किसी ट्रीटमेंट के दे रहा हूँ तो इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड एंड अ बैड ड्रग, राइट? अगर मेरी बॉडी में नेचुरली कुछ प्रोड्यूस हो रहा है जो मेरी हार्मफुल है, तो उसको निकालने के लिए, उसको टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने के लिए दीज एमडीआर प्रोटीन्स आर वेरी एफिशिएंट एंड दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड आल्सो. बट अगर कोई पेशेंट है, लाइक कैंसर पेशेंट है, उसको मुझे कीमोथेरेपी के थ्रू उसको ठीक करवाना है, राइट? तो मैं कीमोथेरेपी देता हूँ, वो उसको भी हटा देता है इररिस्पेक्टिव, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ नॉट केपेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन whether that particular drug is an important drug for the particular host or not, right? So therefore we can say that they exhibit very little substrate specificity. That means we can say these MDR proteins are very less या very little substrate specificity इनकी होती है. They have very little substrate specificity, right? Therefore इनकी जो common characteristic है वो ये है कि कोई भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल अगर मिलेगा, ये उसको ट्रांसपोर्ट करा देंगे, इररिस्पेक्टिव वो ड्रग काम की है या इररिस्पेक्टिव वो ड्रग काम की नहीं है, राइट? what they'll do is, irrespective of the drug की वो काम की है या नहीं है, अगर उनको हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस वो मिला, मॉलिक्यूल जो कि काइंड ऑफ ड्रग रिलेटेड है या काइंड ऑफ एनी टॉक्सिक इफेक्ट काइंड ऑफ शो करने की क्षमता रखता है, what will they do? They'll be kind of moving that particular drug molecule out of the cytosol. Hence the common characteristics of all MDR proteins, multi drug resistant proteins, are known as hydrophobic vacuum cleaner. They are called as hydrophobic vacuum cleaner. इसीलिए हम इनको hydrophobic vacuum cleaner भी कहते हैं. Why we call them as? Because they are irrespective of any substrate specificity. वो जो भी hydrophobic molecule देखते हैं उसको pass on कर देते हैं outside the cytosol, so that it can prevent that. So this is about basic MDR. अब उसको आगे मूव करने से पहले और एग्जांपल्स हम देखते हैं, और देखने से पहले जो इनका मैंने बताया कि एटीपी का फॉस्फोराइलेशन की बेसिस पे जो काम करते हैं, हमारे पास दो तरीके के हो गए. वी हैव बैक्टीरियल एबीसी ट्रांसपोर्टर्स एंड वी हैव यूकैरियोटिक एबीसी ट्रांसपोर्टर्स. सी वी हैव बैक्टीरियल एबीसी टाइप ट्रांसपोर्टर्स and we have eukaryotic ABC type transporters. You can see in the bacterial ABC type transporters, the movement is from solute molecules is entering from the outside environment and it is entering the cytosol, right? The movement is from like this, right? And ATP binding site जो है वो यहाँ पे bind हो रहा है, right? Whereas in another case, eukaryotic ABC type transporters के अंदर ATP binding sites जो हैं वो kind of थोड़ी बहुत अलग जगह पे रहती हैं. Here they have mentioned as an exactly same residues, but the residue number is kind of variable, right? And the transport protein is kind of like this, that is from cytosol to outside environment, that we have already seen in MDR, right? Which is eukaryotic ABC transporters. तो वो cytosol से out of the cytosol सामान को transport करते हैं, right? तो solute molecule सबसे पहले अंदर आएगा, ATP molecules attach होंगे, ATP molecules जो हैं वो hydrolyze होंगे to ADP molecules, to inorganic phosphate will be released, and what will happen, ऊपर का portion जो है वो open हो जाएगा and solute molecule will be released outside, right? Such that the transport of that particular hydrophobic molecule is completed. And same case happens on the bacterial side, जिसके अंदर जो solute binding site है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे on the extracellular site, right? So you can see both the pictures are from different book. This book is from the first wala and this is from the Cooper, right? So I have combined and shared here, right? So this is the model of an ABC transporters जिसके अंदर ATP bind करेगा, substrate जो है वो अंदर आ जाएगा, then
ATP is then hydrolyzed to ADP, which is on a specific site, एक particular जगह पे ABC binding domain जहाँ पे ATP bind करता है, ABC domain जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे ATP bind करेगा and specifically it will move, and they generally have two binding domains. Please keep in mind they have 1 and 2 transmembrane segments, and they have 1 and 2 ATP binding domain, right? Generally they have two ATP binding domains and two transmembrane segment, yeah, transmembrane domains, right? You can also have one pair of each, right? कि एक transmembrane segment and एक ATP binding site. You can also have like this, but generally they are found in pairs, right? So we write like this. But ऐसा नहीं होगा कि दो transmembrane segment है और एक ATP binding domain है, वो कभी नहीं होगा, right? It will either have one of each or either both of them would be there, right? Absolutely, I guess it would be clear. So this similar phenomena of MDR, जो MDR जैसा similar phenomena जो है वो एक और जगह पे होता है, वो क्या है? The similar phenomena occurs in the Protista Plasmodium falciparum, which is a malaria causing pathogen, right? So the related phenomena of this multi-drug resistance gene, जैसे multi-drug resistance protein जो है वो साइटोसोल से आपका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंकता है, similar phenomena happens in protist which is Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, which causes nothing but malaria, right? So what happens in this is P falciparum, Plasmodium falciparum has become resistant to some anti-malarial drug, which is chloroquine. क्लोरोक्वीन एक ड्रग है विच इज एन एंटी मलेरियल ड्रग, राइट? तो पी फैल्सिपेरम जो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, इट हैज नाउ बिकम अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज इट जीन, इसकी जो जीन है, जो पी फैल्सिपेरम, जो क्लोरोक्विनोन जो ट्रांसपोर्ट करने का जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है जो इसके लिए इन्वॉल्व है, राइट? वो क्या करता है? वो इसको पंप आउट करता है जैसे ड्रग्स को पंपिंग आउट करते हैं, right? Because of this, P. falciparum has become resistant to this anti-malarial drug. Okay? So the related phenomena occurs in the protist, which is Plasmodium falciparum, which causes malaria, and it has become resistant to an anti-malarial drug, which is chloroquine, due to the amplified gene encoding ABC transporters. क्यों? क्योंकि जो ABC transporter की जीन है वो एम्पलीफाई होती है जो कि इस ड्रग को पंप आउट करती है, which pump out this drugs, which pump this drug out of the substance, right? So the similar phenomena happens as in MDR is also happening in during this malaria causing protest, right? I guess it's going good till now. चले आगे. Mr. Cool. Yes. So another example for this same thing is, we have another example of it is, that is cystic fibrosis. Another example we have is cystic fibrosis. Cystic fibrosis transmembrane मतलब CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein. Another example of this same ABC type transport protein is cystic fibrosis transmembrane conductance. This is the full form. Conductance regulator protein, CFTR. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein, or CFTR, functions as a chloride channel. This CFTR functions as a chloride channel in epithelial cells.
in epithelial cells of lungs. Lungs के epithelial cells के अंदर the CFTR, which is cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein, functions as a chloride channel, right? It is activated by the CFTR is it is activated by cyclic AMP, cyclic AMP, and hence the cyclic AMP dependent phosphorylation. Cyclic AMP dependent phosphorylation is important for its activation. Cyclic dependent AMP phosphorylation is important for its activation. First thing, it is also importantly activated by ATP hydrolysis. ATP hydrolysis. So it needs both cyclic AMP phosphorylation to function, and it needs an ATP binding site या ATP hydrolysis भी जरूरी है. So both of them are necessary for this CFTR to function. इसमें से कोई भी एक process नहीं होगा that particular CFTR will not function, and CFTR is nothing but it is an example of your ABC transport protein. राइट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ठीक है, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. ऑफ दिस ये आपका 6 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, जो मैंने बताया था 6 अल्फा हेलिक्स होंगे, राइट. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6. So this is one transmembrane domain, TMD1, right? We have another transmembrane domain, 1 2 3 4 5 6. This is again TMD2, transmembrane domain 2, right? So we have two transmembrane domains. Then we have two ATP binding domain. दो ATP binding की domain होंगी, right? So we have here one ATP binding domain, right, which is ATP binding cassette or ABC you can say, right? And we have one here. This is also again another ATP binding cassette protein. This is the C terminal end, this is the N terminal end, and this CAMP dependent phosphorylation is also present, which is also necessary for this particular CFTR to get activated. तो यहाँ से आपका CFTR की ये phosphorylation वाली जगह है, राइट, जहाँ पे आपका phosphorylation होगा. ठीक है, तो अब इनको हम बोलते क्या क्या हैं, इनके जो नाम हैं. So this ATP binding cassette or NBD1, nucleotide binding domain 1, NBD1, ठीक है. This is nucleotide binding domain 2, NBD2, and the phosphorylation site जहाँ पे cyclic AMP dependent phosphorylation होता है उसको हम बोलते हैं R domain. R domain, we call it as R domain. So these are the 6 alpha helix structures, right? So this is a complete basic overview of a structure of a CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein, which is nothing but an ABC type transport protein. ठीक है, क्या है ये, एक ABC टाइप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि एपिथेलियल सेल्स लंग्स के अंदर प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन की मूवमेंट को काम करता है, रेगुलेट करता है. ठीक है, now how this ion channel works. For opening the channel को ओपन करना है. For opening the channel को अगर ओपन करना है, the R domain must be phosphorylated, which is activated by cyclic AMP, right? जो कहां से आएगा, cyclic AMP से आएगा. तो R domain पे क्या होना चाहिए, phosphate group लगा होना चाहिए. R domain must be phosphorylated, and this phosphorylated is accompanied, मतलब ये phosphorylation आ कहां से रहा है, this phosphorylation is coming from cyclic AMP activation. साइक्लिक एएमपी का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है, इट इज एक्टिवेटेड बाय
Cyclic AMP is activated by an enzyme called as protein kinase A, called as protein kinase A. So the activation of protein kinase A due to some intracellular signaling molecules, right? Protein kinase A is an enzyme जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर बहुत यूज होता है, राइट? तो कुछ भी चेंज हुआ, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर से सिग्नल आया, कुछ भी आया, तो प्रोटीन काइनेस ए इज एक्टिवेटेड, राइट? एंड जनरली इट इज एक्टिवेटेड यूजिंग जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर। तो जीपीसीआर की एक्टिवेशन कोई भी लाइगेंड बाइंड करने से, जैसे एपिनेफ्रिन बाइंड करता है जीपीसीआर के ऊपर, तो जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है, राइट? वी विल स्टडी दिस how the GPCR and all the stuff are functioning in greater detail during cell signaling processes. तो GPCR जो है वो क्या करेगा? GPCR will get activated, it will bind to protein kinase A. Protein kinase A will activate the production, or it helps in the production of cyclic AMP, right? It helps in the production of cyclic AMP. तो cyclic AMP की concentration increase करती है. Cyclic AMP will nothing but it will help in the phosphorylation of this particular R domain which is of CFTR. CFTR की R domain को ये क्या करेगा? Phosphorylate करेगा. So for opening the channel, this R domain का phosphorylation is necessary. First criteria. Second is the binding of ATP. Binding of ATP at NBD domain. At NBD domain. NBD domain के ऊपर ATP binding जरूरी है. कौन सी NBD domain, 1 या 2? It is both the ATP binding domain. दोनों NBD1, NBD2 दोनों के ऊपर ATP को जो है वो बाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? दोनों NBD बाइंडिंग डोमेन के ऊपर ATP बाइंड होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तभी चैनल जो है वो काम करेगा, राइट? Now, what will happen if a phosphorylation event doesn't take place but ATP has been bound? First scenario. Second scenario is what will happen if ATP has bound but phosphorylation is not taking place? Right? Phosphorylation हुआ है लेकिन ATP नहीं है, तो क्या होगा? ATP है, phosphorylation नहीं है, तो क्या होगा? So these two cases scenario. Can anyone tell me what will happen if R domain is not phosphorylated? Case 1. R is not phosphorylated. What will happen in case 1 if R is not phosphorylated? Can anyone tell me? What will be the function of unphosphorylated R? You can also say this. R domain ka unphosphorylation state. CFTR will not open. Okay. So first case में there would be CFTR will not open, right? Okay. Then in the second case no ATP. What will happen during no ATP formation? कि अगर ATP नहीं बाइंड कर रहा है NBD डोमेन पे तो क्या होगा? तब भी चैनल ओपन नहीं होगा. तब भी चैनल ओपन नहीं होगा, right? No. So there is a kind of twist here. The phosphorylation event is important for opening of the channel. The phosphorylation event is important for opening the channel, whereas the ATP binding domain is necessary for closing of the channel. For closing the channel. That means अगर unphosphorylated R domain है, if there is unphosphorylation, no phosphorylation, phosphorylation नहीं है, there is unphosphorylation, it will inhibit the opening of channel. Inhibit opening. What will happen? Channel open नहीं होगा, right? If there is no phosphorylation or unphosphorylated state of R domain,
what will happen? It will inhibit the opening of channel. Whereas ATP hydrolysis is essential for closing of the channel. तो अगर ATP नहीं बाइंड होगा, उसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, बिकॉज जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा, राइट? तो ATP hydrolysis is essential for closing of the channel, right? So if there is no ATP, if there is no ATP, what will happen? The closing of the channel would be inhibited. Inhibit closing of the channel, right? It will inhibit the closure of the particular chloride ion channel, right? So I'll repeat again. Unphosphorylated R domain will inhibit the channel opening, whereas no ATP hydrolysis will result in inhibition of closing of the ion channels, the CFTR ion channel. How will the chloride ion concentrations will be affected outside then? I didn't understand your question, Kriti. How will the chloride ion concentration will be affected? I didn't get it. मतलब ये तो सिर्फ फंक्शनिंग है कि क्लोराइड ये काम कैसे करेगा. ट्रांसपोर्ट तो क्लोराइड का ही कर रहा है. द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज फॉर क्लोराइड ओनली. अगर एटीपी बाइंड नहीं होगा तो चैनल क्लोज नहीं हो पाएगा, हमेशा ओपन रहेगा, राइट? लेकिन अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं है तो वो चैनल ओपन ही नहीं होगा, वो हमेशा क्लोज रहेगा. I didn't get your question. Can you please expand and something tell me? यस, इफ अगर अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर एटीपी खराब हो गया, एटीपी बाइंड नहीं हो रहा तो चैनल हमेशा ओपन रहेगा, तो इट विल अफेक्ट द आयन कंसंट्रेशन, राइट? सिमिलरली फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ तो इट विल अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, राइट? वो चीज तो राइट है. See, it's not the only channel which is working for the chloride ion transport. ये खाली एक इकलौता यही चैनल नहीं है जो क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन कर रहा है, right? But it is a kind of an essential one because in lungs, the movement of chloride is necessary for the production of mucus, thin mucus. तो अगर क्लोराइड आयन मूव नहीं कर पाएगा, राइट, तो आपका म्यूकस जो है वो काइंड ऑफ जो बनना चाहिए, राइट, वो एक क्लिनिकल कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस. वो इसी से रिलेटेड है, राइट? तो क्या होगा, हाँ, क्लोराइड आयन जो है वो नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए, थिन म्यूकस बनाने के लिए, जो कि फ्री फ्लोइंग है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो करता है, क्या बोलते हैं, लाइन करता है, सो दैट इट कैन बी प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ स्टफ. म्यूकस काइंड ऑफ क्रिएट करता है, राइट? अगर इस पोजीशन के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो जाए, डिलीशन हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो जो थिक म्यूकस प्रोवाइड होता है, जो म्यूकस होता है वो थिक प्रोड्यूस होना होता है. व्हाई? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज डिस्टर्ब्ड, क्योंकि क्लोराइड आयन ही है जो कि उसको क्या करता है, थिन और फ्री फ्लोइंग म्यूकस की प्रोडक्शन करता है. बट अगर क्लोराइड आयन नहीं होगा तो देयर विल बी अ स्टिकी एंड अ थिक म्यूकस लाइनिंग विच विल बी फॉर्म्ड, राइट? तो कंसेंट्रेशन में ऑफ कोर्स चेंज आया, इसी कंसेंट्रेशन चेंज की वजह से जो है वो डिसीज हो रही है, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस. एब्सोल्यूट कंसेंट्रेशन कितना माइक्रोमोलर है वो मुझे नहीं पता, बट या there is a change in the concentration that is resulting in this particular disorder, and that change in the concentration will happen because of the changes in this ATP binding domain, R domain or any other stuff. पूरे चैनल में कहीं पे म्यूटेशन हो जाएगा तो वो चीज हो जाएगा. यस यस, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. ओके, थैंक यू. यस, वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ही था, मुझे वही बताना था वैसे नेक्स्ट पॉइंट. ओके, ठीक है. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज अ फॉस्फोराइलेशन R domain
or there is an ABC which is R domain पे phosphorylation and then there is an ATP binding domain. तो जो phosphorylation event है that is kind of important for opening of the channel, whereas जो ATP hydrolysis है that is important for the closing of the ion channel, right? So another point is the movement of chloride. I don't have access sheet here, so I'll just add one tab. Just a second. I'm sorry for that. I'm sorry for that. I didn't add one slide. Yes. तो जो हमने लास्ट अभी इसमें देखा कि ओपनिंग ऑफ आयन चैनल राइट के लिए हमको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तो ये सारा का सारा किस में हेल्प कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ क्लोराइड के अंदर, क्लोराइड चैनल की मूवमेंट के अंदर क्लोराइड आयन की जो मूवमेंट है वो ये दोनों ये एबीसी टाइप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं. सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड इन एंड आउट. ओके. Then this movement of chloride channel, as I've already informed, this movement of chloride channel is necessary for the production of thin and free flowing mucus, जो कि normal condition में होता है. Thin and free flowing mucus, थिन और फ्री फ्लोइंग म्यूकस की जरूरत होती है, राइट, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ठीक है, रेस्पिरेटरी लाइनिंग, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट, इन सब चीजों को लाइन करता है ये म्यूकस, जो कि किसकी वजह से है, आपका क्लोराइड आयन की वजह से, राइट. सो द मूवमेंट ऑफ दिस क्लोराइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिन फ्री फ्लोइंग म्यूकस. If there is any mutation in this CFTR protein, CFTR ABC ट्रांसपोर्टर में, CFTR में अगर कुछ भी म्यूटेशन हो जाए तो देयर रिजल्ट्स इन अ प्रॉब्लम. तो जो म्यूटेशन होती है जो जनरली दिखी गई है इन 95% केसेस, जो 95% केसेस हैं उनमें जो म्यूटेशन है वो किस पोजीशन पे है, इट इज एट द पोजीशन at position 508. इस प्रोटीन के CFTR प्रोटीन के पोजीशन नंबर 508 पे देर इज अ deletion of an amino acid phenylalanine. phenylalanine क्या होती है, वो डिलीट हो जाती है, वो phenylalanine is not present. So mutation in the gene encoding CFTR at position number 508 leads to the deletion of phenylalanine, causes the disruption in folding of that particular protein. Disruption in proper प्रोटीन फोल्डिंग. तो जो जिस स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन को फोल्ड होना होता है वो प्रोटीन फोल्ड ढंग से नहीं होता है, तो इम्प्रॉपर फोल्डिंग होती है, जिस वजह से जो ये स्ट्रक्चर मेंटेन होना होता है TMD 1 2 R डोमेन ABC डोमेन, ये सब नहीं दिखता है, राइट. इट्स काइंड ऑफ एन इम्प्रॉपर फोल्डिंग. दिस सिचुएशन लीड्स टू अ clinical condition which we call as cystic fibrosis, which we call as cystic fibrosis, which we call as cystic fibrosis. It is an autosomal recessive disorder. ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट मीन्स दोनों अलील्स अगर नहीं है इस पर्टिकुलर CFTR को जो एनकोड करती है जीन, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, बिकॉज एक अलील होगी तो काम चल जाएगा, राइट. So cystic fibrosis is the main disorder which is happening because of the mutation at position number 508, which leads to the deletion of an amino acid which is phenylalanine, resulting in the disruption of proper protein folding. तो properly जो है वो protein fold नहीं हो पाता है, right. So what are the features of this particular disease? क्या क्या हो जाता है
इस पर्टिकुलर डिसीज की वजह से, दैट मीन्स यू कैन से व्हाट आर ऑल द सिम्टम्स, यू कैन से, राइट, क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वी हैव स्टिकी एंड थिक, स्टिकी एंड थिक म्यूकस, स्टिकी और थिक म्यूकस लाइनिंग जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, राइट। देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू पल्मोनरी पाथवेज, राइट, जो आपके एयरवेज हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, दैट मीन्स डिफिकल्टी ब्रीदिंग। देन वी हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस को बढ़ जाना, राइट, रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, recurrent bacterial infection, right. Then the pancreas and sweat glands functions abnormally, right. There is also a disruption in the functioning of pancreas and sweat glands जो कि abnormal function करते हैं, and the presence of excessive salt, excessive salt in sweat, पसीने में बहुत ज्यादा नमक होता है, राइट। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, जिसके अंदर स्टिकी एंड थिक म्यूकस होता है, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आपके एयरवेज का, देन देयर इज अ रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। देन pancreas and sweat glands function abnormally and there is a presence of excessive salt in sweat. How can you manage this particular stuff? What are all the treatment involves? The management involves physical therapy for bronchial drainage, राइट। ब्रोंकियल से आपके ब्रोंकस में जो भी म्यूकस है उसको फिजिकली हम रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा स्क्वीज आउट करते हैं थेरेपी के थ्रू, राइट। डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज आर देयर। वी हैव डिफरेंट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करती हैं, राइट। देन वी हैव पैनक्रियाटिक, अगर कुछ पैनक्रियाटिक रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ गई हैं जो कि पैनक्रियाज एंड स्वेट ग्लैंड जो हैं वो काइंड ऑफ रिलेटेड रहते हैं, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम replacement therapy is also involved. So you have three management techniques. We have physical therapy for bronchial drainage, we have antibiotic treatment, or we have pancreatic enzyme replacement therapy. Pancreatic enzyme replacement therapy. Right? So these three are the management things that we can perform. I'll repeat it again if you have not written. Physical therapy for bronchial drainage, antibiotic treatment, and third is pancreatic enzyme replacement. We have certain drugs which have been recently identified for this particular treatment. So we have two drugs, right. तो जो पोजीशन 508 की डिलीशन के लिए काम करती है दैट इज ल्यूमा कोफैक्टर ड्रग, पहली ड्रग का नाम है LUMA, ल्यूमा का फैक्टर, right. So this is a drug which has been identified. It involves the treating, or it not kind of exact treatment तो नहीं हो पाएगी, right. So it involves for 95% cases which involves the deletion at position number 508. तो ये उसके लिए काम करती है for 508 deletion. तो जो 5% केस बच गए वो किस वजह से हो रहे हैं? 5% केस जो बच गए वो हो रहे हैं ग्लाइसिन 551 पे एस्पराजीन जो है वो म्यूटेट हो जाता है। सो द 5% केसेस जो रिमेन रहते हैं वो किस वजह से रहते हैं? जो 5% केसेस हैं एट पोजीशन नंबर 551 ग्लाइसिन इज रिप्लेस्ड विद एस्पराजीन। For to treat this particular situation, a drug named Calidico, KALYDECO, Calidico was approved in 2012 by FDA for this treatment. 2012 FDA ने
इस कैलिडिको को अप्रूव किया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस. इट वाज launched in 2009. This particular drug was launched in 2009, approved by the FDA in 2012. Was approved by the FDA in 2012, and it is working against the functioning against the treatment for glycine replacing to asparagine at position number 551, which is the cause of 5% cystic fibrosis mutations जो कि दिखते हैं. 95% 508 डिलीशंस हैं, whereas जो 5% केसेस हैं उनके अंदर जनरली ये म्यूटेशन दिखती है. So this is all about cystic fibrosis transmembrane conductance protein, regulator protein CFTR, right, which is a kind of ABC transporter, right, transporting chloride ions. I hope it's kind of working fine with everyone. Cool. Shall we move forward? Right? Okay, thank you so much. So the last thing that we need to discuss about is secondary active transport. The last point or the last topic that we need to discuss is secondary active transport. I guess it's clear for everyone here till now. Next we need to find out is what is secondary active transport, right? चले आगे ना? Yes, cool. Yeah. Secondary active transport is an indirect transport. What is it? It is an indirect transport. Transport क्या हो रहा है? Indirect transport occurs uphill, right? Opposite, क्योंकि it is involves an active transport. That means the movement is from low to high itself, right? तो uphill transport हो रहा है from low to high concentration. So secondary active transport, which is an indirect transport, occurs when one solute is coupled with the opposite flow of a different solute that was originally pumped uphill by the primary active transport. तो एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट की जो कि नॉर्मली मूव कर रहा है, डाउनहिल मूव कर रहा है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूट मूव कर रहा है, विच इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस, राइट, विच इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो, नॉर्मल प्रोसेस, राइट. उसकी फ्लो की एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको कपल करके the transport is made uphill, that is from low to high, which is an endergonic process, is accomplished, is called as a secondary active transport. That means हम इसकी मदद लेके इसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, इस पर्टिकुलर सोल्यूट को लो से हाई में पहुंचा रहे हैं, right? So secondary active transport occurs when an endergonic, that is low to high और uphill भी बोल सकते हैं हम, right? ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर, which is an energy taking process, right? So secondary active transport occurs when an endergonic transport or the uphill transport of one solute, is particular solute, is joined with a downhill or exergonic process, of a different solute. क्योंकि यहाँ पे solute A है, इस तरफ जो move कर रहा है इस direction में, that is solute B. So the movement with solute B is coupled with the uphill movement of solute A.
और ये जो सोल्यूट मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, दैट इज इन्वॉल्व. So linking these two things is a kind of a process which is called as a secondary active transport. That means the energy is not being directly taken, it is being taken using some other source. किसी दूसरे जगह से लेकर आए हुए. Right? So if I give you the basic example for this, तो इसका बेस्ट सबसे पहले जो हम एक एग्जांपल देखते हैं वो है लैक्टोज परमिएस ट्रांसपोर्टर. एग्जांपल इज लैक्टोज परमिएस ट्रांसपोर्टर. Lactose permease transporter is one of the phenomena, right? तो आपकी नॉर्मल सेल के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, ये आपका H प्लस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने वाला पंप है, राइट, विच इज ट्रांसपोर्टिंग दिस H प्लस, राइट, from this state using ATP to this site which is H plus, right, from low concentration to high concentration. So ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सिंपल. So this is nothing but a primary transport. Why primary? Because an ATP molecule is involved and it is pumping from low to high. Simple, right? Now what is secondary active transport is this one. यहाँ पे आपका एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और है जो कि इसी H प्लस का यूज करके, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन H प्लस है, तो H प्लस इज मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मली डाउनहिल मूवमेंट, right, H plus from high concentration to low concentration along with a particular solute molecule which is nothing but आपका कोई भी solute molecule हो सकता है, right, लैक्टोस को ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट. सो एक पंप जो है वो H प्लस को बाहर भेज रहा है फ्रॉम लो टू हाई एंड इट इज कपल्ड विद द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ H प्लस आयन along with an endergonic process which is uphill. So this particular phenomena is secondary active transport, whereas this is a primary active transport. I hope it's clear to everyone. Primary active transport and secondary active transport. Lactose permease transporter is an example. We have different example which is a glucose transporter also, sodium glucose transporter, वो भी इसी का ही टाइप है, अभी हम देखते हैं 2 मिनट में. तो लैक्टोज परमिएस ट्रांसपोर्टर, इसको हम गलैक्टोसिडेज नहीं गलैक्टोसाइड परमिएस भी बोलते हैं. लैक्टोज परमिएस ट्रांसपोर्टर बोलो या गलैक्टोसाइड परमिएस ट्रांसपोर्टर बोलो, it's one and the same thing, right? So we have lactose permease transporter or galactoside permease transporter present on the plasma membrane of the bacteria such as E. coli and utilizes the proton gradient. प्रोटॉन के ग्रेडियंट का यूज करके लैक्टोज को इनसाइड लेकर आते हैं. सिम्पोर्ट मैकेनिज्म, दिस इज सिम्पोर्ट because both of them are traveling in the same direction, so this is symport. This is symport, right? So this is one of the examples for it.
Another example for secondary active transport is the sodium glucose transporter that we have seen already. Sodium glucose, they are present, sodium glucose transport proteins जो कि secondary active transport है, they are present on the epithelial cells, of small intestine. They are present on epithelial cells of small intestine and actively transport the glucose molecules from the gut lumen into the cell. तो ये आपकी गट ल्यूमन दिखा रखी है यहाँ पे. तो गट ल्यूमन से ग्लूकोज को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनसाइड दी सेल. ये सेल के अंदर लेकर आए, फिर उसको बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फ्लूइड में भेज दे ताकि वो आगे जाए, जिन जिन सेल्स में उसको जाना है वो जाए. राइट. So what is happening is, if we explain, तो ये आपका ल्यूमन साइड है, ठीक है. ये आपका सेल है जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है. ये आपका स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलो या इंट्रा सेलुलर स्पेस, जो दो सेल्स के मतलब उसमें हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, राइट, या फ्लूइड, ठीक है. तो ग्लूकोज जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपके ल्यूमन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि आप खाना खा रहे हो, फूड ब्रेक डाउन हुआ, यहीं पे सारा कुछ ल्यूमन में हो रहा है, राइट. तो लो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हियर, लो ग्लूकोज इज हियर, right, and the movement is from low glucose to high glucose concentration which is inside the cell. तो जो मूवमेंट है वो ऐसे हो रही है, ग्लूकोज की मूवमेंट जो है वो ऐसे हो रही है, एंड इट इज कपल्ड विद सोडियम ट्रांसपोर्ट. इट इज कपल्ड विद सोडियम ट्रांसपोर्ट. It is coupled with sodium transport. How sodium transport? Because there is a high sodium gradient here, due to dietary fibers and stuff, and low sodium inside the cell. Low sodium inside the cell. Low sodium inside the cell. Right? सिमिलरली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका ग्लूकोज जो है वो कम है, लो ग्लूकोज, वेयर एज हाई सोडियम. हाई सोडियम. जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो फ्रीली, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो फ्रीली अंदर आने के बाद यहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. पैसिव ट्रांसपोर्ट है ग्लूकोज का, पैसिव ट्रांसपोर्ट है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का. और यहां पे आपका इसी मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, राइट, जो कि यहाँ के सोडियम को, इनसाइड जो सोडियम है उसको लेके पोटेशियम अंदर भेज रहा है. So sodium is moving out and potassium is moving inside. You can just see this particular figure, this particular diagram. I've just made that same diagram in a kind of flow chart kind of stuff. Okay, and it is traveling through this glucose, ये जो molecule जो जा रहा है ये GLUT transporters हैं, GLUT, GLUT transporters, ठीक है. और ये जो हैं ये आपके SGLT हैं, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर्स, SGLT, और दूसरी मेम्ब्रेन पे ग्लूट ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. सो दिस इज अ बेसिक पिक्चर, ठीक है. तो अगर आप बेसिक उसमें डायग्राम में देखें तो क्या दिखेगा, द ग्लूट मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं, दे आर कन्फाइंड टू द बेसो सरफेस, जो कि ये वाली सरफेस है, दिस इज बेसल सरफेस, वेयर एज जो आपके एपिकल सरफेस हैं
उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर आपके SGLT सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के चैनल प्रोटीन जो ATPase हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर. So this is a basic movement of how glucose is moving inside and outside the cell, how it is absorbing, how it is moving, ठीक है. I hope it's kind of clear to everyone, right? Working fine with everyone. So this is how Symport or a kind of sodium linked transport is there, which is a kind of a secondary active transport, right? क्योंकि ऑलरेडी सोडियम की मूवमेंट जो है उसके थ्रू काम करके उसकी एनर्जी का दूसरा जो पंप है उसकी एनर्जी का यूज करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मूव करा रहे हैं. यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है, पहले ये काम कर रहा है जिसकी वजह से सोडियम ग्रेडियंट बन रहा है और सोडियम को अंदर लिया जा रहा है, राइट. एंड सोडियम को अंदर अंदर लेते आते ग्लूकोज भी साथ में मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ सेल के अंदर लेके आ रहे हैं, राइट. सो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, right, occurring in small intestines, epithelial cells of small intestine, right. Done. So this is what is all about the transport proteins, different stuffs of transport protein जो कि हमने बात करनी थी, right. So I guess it's clear with everyone now. Shall I move forward? Any doubt regarding any of the topics that we have covered so far in cell membrane and the transport protein? So here we come to an end of module number 1, which is cell membrane and transport protein. Right? खत्म करें? Right? Shall I move forward? Any doubts? Any doubt? So now is the time for some question answers to practice some MCQs. They are kind of very basic MCQs, not that much very hard. Basic ही हैं, just to find out or check to have कि concept वगैरह जो भी basic points हैं वो clear है या नहीं है. Just to check on this stuff, right? So shall we move forward? You only have two answers, type A, B, C or D. जो भी आपके options होंगे उनके थ्रू आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर होना चाहिए, right? जस्ट टाइप ए बी सी. क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे वैसे तीनों क्वेश्चन एक पेज पे 3 क्वेश्चंस हैं, बट यू हैव टू आंसर ओनली द फर्स्ट वन फर्स्ट, राइट. सो विल डिस्कस अबाउट दैट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, और एल्स विल मूव फॉरवर्ड. चले, shall we discuss questions now? Okay, very much fine. So here is the question number, here is the question number 1. Question number 1 says, which of the following lipids is abundantly present in the membrane of the cell? Please answer only the question number 1. Which of the following lipids is abundantly present in the membrane of a cell? They are asking general membrane composition, not for a single, कोई nerve cell, कोई दूसरा cell, कोई specific नहीं किया है. They are saying generally. Which of the following lipids is abundantly present in the membrane of the cell? Sulfolipids, glycerophospholipids, galactolipids, or sphingolipids? A, B, C, or D? Which is the correct answer? Sudhanshu says B. Okay. B. Jashwant B. Shiva B. Okay, cool. Kriti B. Very good. So the answer for this question is B. Glycerophospholipids. I guess everyone knows the answer. You don't need to have anything kind of
knowledge for that. Yeah. Question number two. In archaebacteria, question number two. In archaebacteria, the membrane phospholipids are linked by. In archaebacteria, the membrane phospholipids are linked by ester, ether, phosphodiester, or glycosidic. Question number two. Again, B. Okay. Ester linkage, ether linkage, phosphodiester, glycosidic bonds. बी आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि इसमें क्या होती है, एस्टर लिंकेज होती है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग काइंड ऑफ मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी वगैरह के अंदर जब हमने बात करी थी मेंटेन करने में उसमें काम करती है, राइट. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. A poikilothermic organism living in the Arctic. A poikilothermic organism living in the Arctic would have, compared to the one living in the temperate climate zone, a plasma membrane richer in which of the following of the options? Cholesterol, long chain fatty acids, protein, or unsaturated fatty acid. A poikilothermic organism living in the Arctic would have, compared to the one living in the temperate climate zone, a plasma membrane richer in which of the following. That means you just have to say कि poikilothermic organism में plasma membrane के अंदर कौन सी कॉम्पोजिशन इनमें से ज्यादा होगी. यू हैव टू से दैट. क्वेश्चन नंबर 3. Poikilothermics are one who cannot regulate the body temperatures on their own. An organism, poikilotherm are organisms which cannot regulate their body temperature, whose internal temperature varies considerably. तो आपको बताना है कि poikilotherms organisms में which are living in the temperate climatic zone, उनके कंपैरिजन में poikilotherms में क्या चीज मेम्ब्रेन में ज्यादा होगी. बोलो भाई. थर्ड ए. Oh my god. You all are wrong, I guess. Please think again. It's unsaturated fatty acids. Yes, it's D. Good, Sudhanshu. It's unsaturated fatty acids. Yes, Jashwant. Good. Right? चले आगे. Question number 4. In mitochondria, protons are accumulated in outer membrane, inner membrane space or matrix. It's a very basic question. Class 10th में पढ़ते हैं. In mitochondria, protons would accumulate in which of the following? Outer membrane, inner membrane, intermembrane space or inner membrane space, or matrix.
Yes, please. Yes, please. Oh, sorry. Yes, please. Question number 4. In mitochondria, protons would accumulate in dash. Outer membrane, inner membrane space or matrix. The answer to this is C, इनर मेम्ब्रेन स्पेस. जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं वो वापस अंदर आएंगे और क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, राइट. I'll just come in 2 minutes. I'm sorry. Actually, my phone battery is dead. I'm unable to see your comments. Next question is fifth. In a bilayer cell membrane, lipid molecules are packed in such a way. In a bilayer, question number 5. In a bilayer, question number 5. किसका एबीसी चल रहा है मुझे ये भी बता दो, पता नहीं चल रहा है. 5C, yes. In a lipid bilayer, lipid molecules are packed in such a way that the hydrophilic tails are sandwiched between hydrophobic heads. Hydrophilic heads are sandwiched between all the hydrophilic tails. Hydrophobic tails are sandwiched between hydrophilic heads. And hydrophobic tails are sandwiched between hydrophilic tails. 5C, 5C, okay? 5C, which is hydrophobic tails are sandwiched between hydrophilic heads. Like, absolutely. ये ऐसे होता है, right? So they are sandwiched between this. So it's answer number again C. Thank you. Next, moving on with the next. In fluid mosaic model for membrane structure, which of the following was associated with the fluid mosaic model? Carbohydrates is on the outer surface of the membrane. Lipids, but not proteins, can diffuse in the plane of the membrane. Proteins occur in the inner leaflet, only in the inner leaflet of the membrane. The polar ends of phospholipids face the interior of the membrane. Question number 6. In fluid mosaic model for the membrane structure, carbohydrate is on the outer surface. Lipids, but not proteins, can diffuse in the plane of the membrane. Proteins occur only in the inner leaflet of the membrane. The polar ends of phospholipid face the interior of the membrane. 6A, 6A. Kriti and Sudhanshu. Any other? Chanu A. Jashwant A. Very good.
Absolutely, the answer is A. Easy है questions, कुछ इतना हाई फाई नहीं है, simple simple. All these were questions asked in GATE exam and DBT exam. ये सारे questions जो भी मैं भी discuss कर रहा हूँ ये GATE और DBT के question हैं, not in this year but in previous years. Question number 7. Diffusion across the membrane depends on the nature of substance being transported, and arrange these following substances in the increasing order of the rates of passive diffusion across a biological membrane. तो आपको इनको arrange करना है, chloride ions, water, glucose and urea in the increasing order. In the increasing order. That means जिसको ज़्यादा time लगेगा rate of passive diffusion, जो सबसे ज़्यादा rate लेगा time लेगा उसके basis पे. Question number 7. The options are chloride, water, glucose, urea, water, chloride, glucose, urea, urea, chloride, water, glucose, chloride, glucose, urea, water. Question number 7. Chanu says D. अरे डिलीट कर दिया मैसेज. सुधांशु D. Chanu D. Okay. सबसे मुश्किल है आयंस को ट्रांसपोर्ट करना, राइट? तो क्लोराइड आयंस तो सबसे पहले आएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी एंड सी. उसके बाद ग्लूकोज या वाटर, इसमें वाटर ग्लूकोज है, इसमें ग्लूकोज यूरिया है, तो इट्स ऑब्वियसली ग्लूकोज पहले ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा रेट लेगा ट्रांसपोर्ट का, राइट? वाटर जो है वो स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो ट्रांसपोर्ट इजीली मेम्ब्रेन पे इजीली डिफ्यूज होता है. तो आंसर इज डी. आंसर इज डी. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is not true for facilitated diffusion? Which of the following is not true for facilitated diffusion? Takes place along the concentration gradient, takes place against the concentration gradient, can be directional, follows Michaelis-Menten kinetics or Michaelis-Menten equation. Chanu says B. Shiba, I'm not sure, is giving the answer for which of the following, I don't know. Please try to mention 8A, 8B, जिस जो भी ऑप्शन हो, तो नंबर क्वेश्चन नंबर साथ में डाल दो, so that confusion ना हो. Chanu says B, that is it takes place against the concentration gradient. Okay, any other? For facilitated diffusion, facilitated diffusion माने कि मूवमेंट जो है वो आपका, ओके 8A, Shiba says 8A. ओके, ओके. सी द मूवमेंट जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर हमने बोला था कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, बट वो हमेशा ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं? हाई से लो पे, नॉर्मल, राइट? लेकिन जो मूवमेंट है वो हाई टू लो हो रही है, राइट? फॉर एग्जांपल्स हमारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, यूरिया ट्रांसपोर्ट, ये सब इन्हीं के अंदर काइंड ऑफ आएंगे, राइट? जो हम बात करते हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर इट टेक्स प्लेस अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ओनली, against concentration gradient only takes place during active transport. During active transport. So Shiba, the answer is B. Which of the following is not true पूछा था, गलत है, right? Okay, question number 9. The passive or facilitated glucose transporter is an example of uniport, symport, antiport, ATPase.
passive or facilitated glucose transporters? 9. Shanu says A, Sudhanshu says B, Shiva says B. अभी हमने बात किया ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, यूनिपोर्ट हैं, सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का पास ऑन हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव। 9A, वेरी गुड। 9A, the passive or facilitated glucose transporter is an example of a uniport carrier. ये रहा ना, अभी यहीं तो लिखा, ये रहा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर पासिंग ऑन, ये रहा, सिंपल सीधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू मूव कर रहे हैं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, तो यूनिपोर्ट कैरियर, सिंगल मॉलिक्यूल इज मूविंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is the active form of sodium potassium ATPase? सोडियम पोटेशियम ATPase की एक्टिव फॉर्म कौन सी है? Which of the following is an active form of sodium potassium ATPase, or a pump you can say? Question number 10, deacetylated form, dephosphorylated form, phosphorylated form, glycosylated form? Question number 10, waiting for your answers. Ten C. Sudhanshu says C. Any other? Kriti C. Absolutely, it's the C option. राइट, बिकॉज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के अंदर वो एटीपी सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, राइट। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होती है एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा, फॉस्फोराइलेशन अटैच होगा एंड सोडियम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली फिर ऊपर से पोटेशियम अंदर अटैच होंगे, फॉस्फोरिलेशन से डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल हट जाएगा, व्हाट विल हैपन, पोटेशियम विल मूव इनसाइड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो एक्टिव चैनल क्या हो गया, जब प्रोसेस स्टार्ट होना है, सोडियम को अंदर की बाहर की तरफ पंप करना है, तो इट इज द फॉस्फोराइलेटेड form which is being involved. Question number 11. A mutation in the intrinsic phosphorylation site at sodium potassium ATPase pump. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप में एक म्यूटेशन हो गई है, विच इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको अफेक्ट करेगी? द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम, both inward and outward movement of potassium and sodium, or has no effect on the pump activity but affects its stability? Sudhanshu says B for 11. Any other? सोडियम पोटेशियम एटीएस पंप में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो किसकी मूवमेंट को अफेक्ट करेगा? इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, या फिर नो अफेक्ट? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. सुधांशु सेज 11B. एनी अदर?
The answer for this is, I'm not getting any reply. The answer for this is C, that is both inward and outward movement. Why it is both inward and outward movement? Because phosphorylation site सोडियम पोटेशियम की खराब हो गई. That means सोडियम मूवमेंट ही नहीं होगी बाहर की तरफ, और अगर सोडियम मूवमेंट बाहर गया ही नहीं तो पोटेशियम बाहर से अंदर कैसे आएगा, राइट? तो फॉस्फोराइलेशन में ही प्रॉब्लम हो गया है, दैट इज चैनल का एक्टिव ही नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से दोनों की मूवमेंट विल अफेक्ट, राइट? दोनों की मूवमेंट विल affect, both inward and outward movement of potassium and sodium will be affected. 11C. Moving on to the next question, question number 12. Which of the following statement combinations can be achieved using patch clamp technique, which I already discussed yesterday? पैच क्लैम्प टेक्निक से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इट इज अ मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन, दैट इज मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट. 11th came in Gate Excel this year. Okay, I don't know. मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं. Maybe I forgot actually. Which of question number 12? Which of the following statement combinations can be achieved using patch clamp technique? It is a multiple select question. That means more than one statement is correct. A, B, C, and D. Question number 12. Intracellular movement of ion channels, post-translational modification of ion proteins, ligand that controls the opening and closing of ion channels, and change in the current flow in a single ion channel. क्या चीज हम पैच क्लैम्प से स्टडी कर सकते हैं? एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Waiting for your answers for question number 12. A, C, and D. Okay. Kriti says A, C, D. Any other? और कोई नहीं है? और I am getting replies late. See, A is not correct because intracellular movement नहीं detect कर सकते until and unless it is a whole cell patch clamp technique. A is not kind of a good thing, right? Because of intracellular movement आपके सोडियम चैनल अंदर मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, you cannot detect that particular stuff, right? It's not practically kind of, मतलब उस पर्टिकुलर पैच क्लैम्प टेक्निक नॉर्मल के लिए नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल कंडीशंस को मूव कर रहे हो. इंट्रासेलुलर नॉर्मल अंदर सेल के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो रही है आयन चैनल्स की, यू कैन डिटेक्ट अ चेंज इन द आयन चैनल मूवमेंट, नॉट द मूवमेंट ऑफ दैट आयन चैनल्स. आयन मूव कर रहे नहीं कर रहे वो नहीं डिटेक्ट हो सकता, बट इफ दे आर मूविंग आउटसाइड एंड इनसाइड, चेंज हो रहा है कहीं पे मूवमेंट, दैट यू कैन डिटेक्ट. सो ए इज रॉन्ग. बी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. चैनल का कोई पोस्ट ट्रांसलेशन, क्योंकि इसका वोल्टेज से रिलेशन है, राइट? पैच क्लैम्प टेक्निक इज हेल्पिंग इन वोल्टेज, राइट? Second is, third is ligand which controls the opening and closing. Absolutely, we can check this particular stuff कि कौन आके उसको ओपन कर रहा है चैनल को, और कौन सा आयन इनसाइड मूव कर रहा है या आउटसाइड मूव कर रहा है. That can be checked. So C option is absolutely correct, right? एक्टिवेशन कैसे हो रहा है चैनल का, right? Change in the ion concentration से पता चल सकता है. Then D option is change in the current flow during a single ion channel. एक आयन चैनल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है. एब्सोल्युटली जब वो वोल्टेज चेक करने के अंदर पैच क्लैम्प टेक्निक इन्वॉल्व है, तो एब्सोल्युटली इट कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द करंट फ्लो एज वेल फॉर अ सिंगल आयन channel. So the correct answer for this is C and D both. Right? C and D both. It is used to check or change the find out the change in the current flow in a single ion channel, as well as it helps in the controlling of the ligand gated opening and closing of the ion channels, right? Question number 13. Question number 13.
The type of transport that does not reach Vmax include the type of transport protein which does not reach Vmax include simple diffusion across lipid bilayer, facilitated diffusion by uniporters, movement of ions through ion channels, or primary active transport via ATP pump. Which of the following does not reach the Vmax? कौन सा Vmax नहीं reach करता है? That means we can have a active relationship. Active मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी. Vmax नहीं पहुंचता है. कौन सा है ऐसा? एग्जाम्पल A B C D. Question number 13. Waiting for your responses. 13D. ATP pumps, Chanu. How is this possible? Jashwant, no, Jashwant is for 12. Okay. 13D. How? ATP pump सारे ATP involved हैं क्या? सारे ATP अगर पंप खत्म हो जाएगा तो how will that Vmax तो reach हो ही जाएगा. Jashwant says A. Kriti says A. Question mark. Sure कोई नहीं है. Sudhanshu says A. Question mark. Are you asking the answers to me? Yes, absolutely. It's A. A. Answer is A. Simple diffusion. राइट. जितना ज्यादा आप सिंपल डिफ्यूजन के लिए लाइक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल अगर कोई होगा, राइट, जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा वो इतना ज्यादा चलता रहेगा. अगर कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को कोई भी कैरियर इन्वॉल्व है, चैनल प्रोटीन इन्वॉल्व है, कुछ भी इन्वॉल्व है, राइट, वो सारा कुछ स्टॉप हो जाएगा एक पर्टिकुलर जगह पे आके वी मैक्स पे, राइट, वो एक वी मैक्स पे रुक जाएगा. No saturation of energy will be there, but there will be a saturation of ATP binding domains, right? ATP जो solute transport कर रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना. जैसे कैरियर प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन की एक लिमिट होगी ना कि वो इतने मॉलिक एक टाइम पे सारे के सारे एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट पंप्स हैं, राइट, जितने एटीपी ट्रांसपोर्ट पंप हैं वो सब ऑक्यूपाइड हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो रुक जाएंगे, सैचुरेट हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है ये. Vmax का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट. अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ा दूंगा तो एटीपी ज्यादा थोड़ा ना ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा. वो तो ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन. वो तो ऑलरेडी उल्टा चलता है एटीपी तो. कृति ठीक. Tanu got it. Okay. Kriti also, I guess, got confused with that. राइट, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. राइट. एंड डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ आयंस के अंदर कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जो कि सैचुरेट हो जाएंगे. सैचुरेशन मींस लिमिट क्रॉस हो गई है, कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ उसके आगे भाई ट्रांसपोर्ट के अंदर जितना होना उतना ही हो सकता है, उसके आगे नहीं कुछ कर सकते चाहे आप एटीपी लगाते रहो. बट जब कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है तो कोई ज्यादा एटीपी थोड़ा ना लगेगी. एटीपी तो उतनी लगेंगी, 2 एटीपी है तो 2 एटीपी लगेंगे जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बना लो. राइट. Okay, question number 14. Going on to question number 14. Which of the following is a P-type ion transporter? I've given the example for this. Direct answer. Which of the following is a P-type ion transporter? Which of the following is a P-type ion transporter? Magnesium Fe2 plus, magnesium Fe3 plus, magnesium and chloride, sodium, potassium, calcium and H plus. It's very simple question. Answer D. Absolutely. Right? We have already discussed it. Question number 15. Moving on to the last question. Question number 15.
Regions of higher abundance of cholesterol molecules on the plasma membrane. हाई कोलेस्ट्रॉल है मॉलिक्यूल्स के अंदर. Regions of higher abundance of cholesterol molecules on the plasma membrane will. ऐसे regions जहाँ पे हाई abundance of cholesterol है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या होंगे? They will be more fluid. Okay, I found this on the. They will be more fluid. They will be more fluid. They'll result in clogged arteries as it can detach from the plasma membrane, be more rigid than the surrounding membrane, or they have higher rates of lateral movement into and out of the plasma membrane. Question number 15. You just need to relate it to something. You need to relate it with something. High abundance of cholesterol. ज़्यादा cholesterol होगा तो क्या होगा? Kriti says A, Tanu says A, Jashwant says A. Okay, may I tell you about lipid rafts? लिपिड राफ्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल कंपोजिशन होती है और वो क्या होते हैं? लिपिड राफ्ट्स. Composition of lipid raft. More lipid concentration in lipid raft. Who said that? Which lipids? Or please revise this concept. Answer is C. It will be more rigid than the surrounding membrane. Lipid rafts are more rigid, ordered structure. जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. I have already informed this particular thing. Questions भी हमने डिस्कस किए हैं. Even we have discussed in the discussion group on Telegram. The surrounding membrane के comparison में it will be more rigid. कोलेस्ट्रॉल उन मॉलिक्यूल्स को खींच के रखेगा. It will bring it together. पास पास बुलाएगा. So the regions of higher abundance of cholesterol on the plasma membrane will make that membrane more rigid than the surrounding membrane. दूर की membrane से it will be more rigid जो आसपास में है. And that is the regions. इन्हीं regions को हम बोलते हैं जो यहाँ पे regions mention किया गया है. Chanu is saying, sir, in cholesterol you said I said कि in high concentration in eukaryotic plasma membrane, it prevents the chain from coming together. वो चेन को पास आने के लिए प्रिवेंट करते हैं, राइट? बट दैट मीन्स कि दे विल मेक द मेम्ब्रेन काइंड ऑफ मोर रिजिड ओनली, राइट? मतलब उसको फ्रीज नहीं करने देंगे. फ्रीजिंग प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करते हैं, बट वो रहेंगे तो रिजिड ही ना. ऐसा थोड़ा ना कि इतना ज्यादा धक्का मार के पूरा ही फ्लूइड मेंटेन हो जाएगा. दे मेंटेन फ्लूइडिटी, राइट? लेकिन आपस जो साइड वाली मेम्ब्रेन है जो उस रीजन के अगेंस्ट में है, राइट?
जो उस बाहर वाली रीजन के साथ में है उसके कंपैरिजन में तो वो रिजिड ही रहेंगे ना. दिस इज द रीजन, राइट. यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है इस पर्टिकुलर जगह पे, राइट. दैट मीन्स इस पर्टिकुलर जगह पे वो क्रिस्टलाइज नहीं होएगा कंप्लीट, राइट. दैट मीन्स some fluidity will be maintained, it won't be crystallized. But when you see as compared to this particular region, they will be more rigid, right. इस पर्टिकुलर रीजन में तो रिजिडिटी ज्यादा रहेगी ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, तो वो फ्लूइडिटी बनाएंगे. ऑफ कोर्स दे विल मेंटेन दैट फ्लूइडिटी, बट वो इतनी ज्यादा फ्लूइडिटी थोड़ा ना बना देंगे कि वो इसको भी पार कर जाएगा जहां पे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, राइट. वो इसको थोड़ा ना पार कर जाएंगे जो साथ वाली मेम्ब्रेन में जहां कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम है. बैलेंस, बोथ ऑफ देम में बैलेंस रहेगा ना. तो सराउंडिंग मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में दे विल बी मोर रिजिड, बट ओवरऑल दे विल बी काइंड ऑफ मेकिंग इट द मेम्ब्रेन इस पर्टिकुलर रीजन में थोड़ी बहुत फ्लूइडिटी को मेंटेन करें, क्योंकि वो उसको क्रिस्टलाइज नहीं होने देंगे, राइट. आई गेस शी इज मोर कंफ्यूज्ड राइट नाउ आल्सो. वो इमोजी देख के मुझे लग रहा है अभी भी कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन है नहीं है. अगर कोलेस्ट्रॉल हाई कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, इट प्रिवेंट्स द चेन फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड क्रिस्टलाइजिंग. वो क्रिस्टलाइज नहीं होने देता है. दैट मीन्स वो काइंड ऑफ हैवी रिजिडिटी नहीं होने देगा. लेकिन जब अगर हम उसको साथ वाली अपनी सराउंडिंग जो एडजेसेंट मेम्ब्रेन है उसी के साथ में अगर हम कंपेयर करें, उसी के साथ उसको अगर हम कंपेयर करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसके अंदर से रिजिडिटी तो रहेगी ना. अगर हम रिलेटिव की उसमें बात करें तो जो एडजेसेंट मेम्ब्रेन है उसके रिलेटिव में इट विल बी काइंड ऑफ मोर रिजिड एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि फ्लूइडिटी तो सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में रहेगी, इस पर्टिकुलर जगह में रहेगी थोड़ी बहुत, बट ओवरऑल फ्लूइडिटी विल नॉट इंक्रीज. Overall fluidity of the plasma membrane will not increase because it is specifying कि some regions are there जहाँ पे higher abundance है. It is not saying the overall membrane को हमने high abundance cholesterol में convert कर दिया. It is saying कि specific regions के अंदर present है. ठीक है. सेम इस केस विद द लिपिड राफ्ट्स. लिपिड राफ्ट्स वो हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल रहता है, हाई स्फिंगोलिपिड्स रहते हैं, एंड कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जैसे कैल्वुलिन वगैरह जो मैंने बताए थे, राइट. So this is about the stuff. So these are all the 15 questions that were asked in various different examination in various years. I hope it's kind of helpful and you got the topic of module 1 completely, and we finished this particular module number 1, which is for membrane structure and transport, right. If you have any queries, you are almost welcome, or else thank you, shubhratri, bye bye, tata. If you like the class, please hit the like button. If you don't like the class, please hit the dislike button. Haha. Thank you all so much for attending the classes. We'll meet you again next time soon, hopefully. So any queries or anything if you want to ask, you're most welcome. Thank you so much. If you like the class, please hit the like button. धन्यवाद बहुत बहुत. Thank you, thank you, thank you. और if you have not filled that feedback form, उसको please fill कर दीजिए. We'll meet you shortly. Okay. Thank you so much. Thank you for attending the class. You don't have the next class today.
only the fun class was there. That's why I kind of extended it to 7:30. So, yep. Thank you so much. Bye bye. Good night.